Welcome back. So, continuing our this chapter, let's start this new topic, chromosomal disorder. Okay. So last video lecture we have discussed genetic disorder. So now we will discuss chromosomal disorder. Chromosomal अगर disorder होंगे तो कौन सा disease पाए जाएंगे. So we will see all those. Three types of chromosomal disorder we will discuss. जैसा NCERT बुक में दिया हुआ है तुम लोग का. So three types of chromosomal disorder we will discuss. First chromosomal disorder we take Down syndrome. देखो ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ठीक है. डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होते हैं, हम लोग का जो 21 पेयरिंग वाला क्रोमोसोम होते हैं ना, 21 पेयरिंग. सो मतलब 1 से लेके 23 तक होते हैं पेयरिंग. तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम में पेयरिंग होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है. ओके, अंडरस्टूड. सो नॉर्मली क्या होते हैं, हम लोग का क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं 1 से लेके 23 तक. सो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग का बॉडी में. तो 21 का जो होते हैं क्रोमोसोम 21 पेयरिंग वाला, उसमें एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाते हैं. ओके, उसको ही हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं. तो इट रिजल्ट इनटू एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है. तो 2 से 3 क्रोमोसोम हो गया ना, तो इसको हम लोग ट्राइसोनोमी बोलेंगे. ट्राइसोनोमी इसको हम लोग ट्राइसोनोमी बोलेंगे, ठीक है. वो क्लासिफिकेशन याद करो, न्यूमेरिक म्यूटेशन में क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन मोनोसोमी, नालिसोमी, ट्राइसोनोमी या ट्राइसोनोमी. यानी एक अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड होते तो ट्राइसोनोमी होंगे. ओके, सो इट रिजल्ट्स इनटू डाउन सिंड्रोम. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ में, तुम लोग नोट्स एनसीईआरटी बुक से देखो, ठीक है. सो यू कैन राइट बाय योर ओन एक्चुअली. So what happened in case of Down syndrome? In the chromosome number 21, one extra chromosome ate with it, result into trisomy. Okay? अगर एक क्रोमोसोम के 8 हो जाता है 21 वाला पेयरिंग वाला क्रोमोसोम में, now the offspring will born with small round head. So symptoms, okay, external symptoms क्या क्या होंगे, small round head होंगे, mental retardation होंगे. मतलब the person will born, the offspring will born with abnormal function, right? Mental retardation है क्या तुम लोग का क्लास में कोई ऐसा? partially open mouth होंगे. तो ऐसा कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं कब, जब 21 पेयरिंग वाला क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है, देन इट रिजल्ट्स इनटू डाउन सिंड्रोम. एंड द विजुअल फीचर वी फाइंड इज अ स्मॉल राउंड हेड, मेंटल रिटार्डेशन एंड पार्शियली ओपन माउथ एंड है अबाउट. सो एनसीईआरटी बुक में देखना, ठीक है, डाउन सिंड्रोम. सो दिस डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट लैंगडन डाउन. इसलिए इसका नाम साइंटिस्ट का नाम से रखा गया, डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन, ठीक है. सो यही है डाउन सिंड्रोम, इम्पॉर्टेंट है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है. देखो जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिफरेंसेस हैं. तुम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का अगर पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल मत लिख देना, ठीक है. ये हो गया क्रोमोसोम. जेनेटिक में जीन का डिसऑर्डर होंगे. जेनेटिक मतलब क्या, जीन. क्रोमोसोम में क्या मतलब क्या, क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होंगे. ये हो गया डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट है
Klinefelter's syndrome. Klinefelter's spelling you check, okay? Try to check this spelling. Klinefelter's syndrome. Klinefelter's का spelling check करना, ठीक है? Same overall same ही है. Klinefelter syndrome में क्या होते हैं? So total we have 46 number of chromosome, right? 46 number of chromosome होते हैं हम लोग का सेल में, हम लोग का बॉडी में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयरिंग क्रोमोसोम होते हैं, राइट? सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23. सो 23 पेयरिंग वाला में हम लोग का क्रोमोसोम व्हाट वी रिप्रेजेंट, सो मतलब 23 पेयरिंग, जो 23 नंबर पेयरिंग वाला क्रोमोसोम वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, राइट? कैपिटल X एंड कैपिटल Y होते हैं 23 नंबर वाला में. तो इन केस ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X आके ऐड हो जाता है. यहाँ में दूसरा कलर से दिखाता हूँ. ओह, आई हैव इन माय हैंड. सो एक एक्स्ट्रा X, one minute, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आके बाइंड हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है? X मतलब क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है 23 वो पेयरिंग वाला में. सो फ्रॉम 46 से क्या हो जाएगा, अभी 46 से इट विल रिजल्ट इनटू 47X. फिर से अलग कलर से लिखता हूँ, एक X अलग X आ गया और XY तो है, ठीक है? सो 46 से 47 हो गया, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आके ऐड हो गया. सो इफ द ऑफस्प्रिंग कंटेन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, देन दे विल बॉर्न विद gynecomastia. Gynecomastia, what does that mean? If the offspring is born with this kind of chromosome, then the offspring will born with gynecomastia. It means they will develop female characters on it. Okay? लड़का में फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देखने को मिलेगा, उसको ही बोलते हैं gynecomastia. ओके? XY होंगे मतलब they will be male only, but there will be a female characters develop. So gynecomastia. Okay, development of breast होंगे, female structure दिखे. Okay, so we call it a gynecomastia in simple words. So try to see this in your NCERT book. Okay, explain कर दिया है मैंने. Klinefelter's सिर्फ spelling को देखना तो. So next we have Turner syndrome. Turner syndrome में क्या होता है? See, total we have 46 number of chromosome, right? एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, ठीक है? एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है. Turner syndrome में it result into the absence of one chromosome. Okay? So एक क्रोमोसोम एब्सेंट होंगे तो 46 से हो जाएगा 45 क्रोमोसोम हम लोग का. Okay? So if there is an absence of one chromosome, then the offspring will born with the defective reproductive organ. Okay, the offspring will born with the defective reproductive organ. So the offspring will be female. Offspring Turner syndrome में क्या होंगे? फीमेल में क्या होंगे? defective reproductive structure पाए जाएंगे. They will be sterile. Okay, sterile होंगे मतलब they will not able to reproduce. sterile होंगे और defective reproductive structure होंगे. Okay, so ये सब genetic chromosomal disorder देखने को मिलते हैं कब? If there is an absence of one chromosome in it. Okay,
So these are the example of chromosomal disorder. मैंने explain कर दिया है, notes NCERT book में देखना, ठीक है? So this is important, chromosomal disorder. So with this we have completed chromosomal disorder, genetic disorder. Next in next video lecture we will discuss pedigree analysis and we will solve some problems on it. Okay, welcome back everyone. So today we have come towards our last part of this chapter. So last topic we have pedigree analysis. Okay, pedigree analysis. This is not something related with dog's food. It is something related with human. Okay, pedigree analysis. What is pedigree analysis, by the way? Okay, it is a record of inheritance of certain traits for 2 or more generations, represented in the form of a diagram. So generation जो होते हैं उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ही पेडिग्री चार्ट बोलते हैं और उसको ही पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं. ओके, सो it is a record of inheritance of certain traits for 2 or more generation. It's represented in the form of a family tree or diagram. ओके, जो ऑफस्प्रिंग का रिकॉर्ड होते हैं, जो जेनरेशन का रिकॉर्ड होते हैं, उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? सो इसको ही बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. नॉट पेडिग्री फूड, इट इज पेडिग्री एनालिसिस. So we need to know the diagram. Okay, एक सिंबल होते हैं उसमें रिप्रेजेंट किया जाते हैं. So मेल का मेल सिंबल होते हैं, फीमेल का फीमेल सिंबल होते हैं, ऑफस्प्रिंग का सिंबल होते हैं. So what we need to see in this topic is we need to remember the symbol, the diagram. So specific diagram for particular sex. Okay, so वही पेडिग्री बोलते हैं. और related with this topic, there is a problem we need to solve. I'll give you that after completing this topic. So this is the last topic of this chapter. Okay, inheritance and variation. Okay, let me use 2 ink to look it beautiful. See, the female are always represented in a symbol. Okay, O. This is for female. अब ये प्रैक्टिकल में भी आते हैं. ओके, थ्योरी में भी आते हैं, प्रैक्टिकल में भी आते हैं कभी कभी. So males are represented in a square form. Male are represented in a square form. Okay. अगर सेक्स आइडेंटिफाइड नहीं है, इधर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेक्स, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इन ए सिंबॉलिकली फॉर्म, अनआइडेंटिफाइड सेक्स. If we can't identify whether it's a male or whether it's a female, so we represent in the form of this diagram, Barfi shape. And then what we need to know now, if in female there is some kind of disease, female में अगर कुछ गड़बड़ है उसका जीन में, if female has some defect. Okay, so हम लोग क्या करते हैं, we just fill the circle completely.
So we fill the circle completely. We fill the circle completely. So that means the female has some kind of disease. So affected female बोलते हैं. Okay? Affected female. Okay. Now if in a male there is some kind of disease, अगर मेल में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मेल का जीन में अगर कुछ डिजीज है, तो सिमिलरली वी जस्ट वायर को हम तोड़ देगा ले. So we just fill completely square. Okay, so that means that indicates the male has some kind of disease. So we say affected male. Okay, so exam में ऐसा symbol मत लिखना. You are not allowed to write now. I'm just showing you with a symbol so that I can minimize my time. So next, what we need to know, mating. Okay, mating, reproduction. So if the female and the male reproduce, तो उसको हम लोग दोनों को लिंक कर देते हैं ऐसे. ठीक है, दिस इंडिकेट्स मेटिंग. मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन. तो ये रिप्रोडक्शन, this one line we connect with the male and female. This indicate the reproduction between unknown female and unknown male. If there is one line that connects both male and female, that means the mating between unknown female, unknown male. Okay, now if there is a mating between close relative, okay, if there is a mating between close relative का बीच में अगर मीटिंग होता हो, तो उसको हम लोग दो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. 2 लाइन वी रिप्रेजेंट. मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, अपना परिवार से अगर मीटिंग होते हैं तो संबंध अपना परिवार, तो वी कॉल्ड इट एज ए कॉन्सेंगुइनस मीटिंग बोलते हैं हम लोग उसको. GUINOUS, consanguineous mating मतलब mating between close relative. So कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, what is consanguineous mating? The mating between close relative is known as consanguineous mating. वाह, इतना सिंपल है. ठीक है, तब तो मैं इसको रफ करता हूँ. सो इसको सिंबल को, डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखना. ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन लाइन दैट कनेक्ट्स बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इंडिकेट्स दैट द मीटिंग बिटवीन अननोन इंडिविजुअल. इफ 2 लाइन्स दैट कनेक्ट, दैट मीन्स द मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव. नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग रिप्रोडक्शन के बाद उसका जो जेनरेशन होंगे उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर ये मीटिंग हो गया दोनों के बीच में, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, ऑफस्प्रिंग. सपोज फॉर एग्जांपल मीटिंग के बाद 2 लड़का हुआ, 1 लड़की हुई. ठीक है, तो लड़का को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर. 2 लड़का, 1 लड़की. लड़की को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल. हो गया, ये हो गया ऑफस्प्रिंग. उफ, इतने इजी है. ठीक है, ये हो गया ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट क्या जानना है? अगर ऑफस्प्रिंग ट्विन हुआ, ट्विन, ठीक है, ट्विन होते हैं ना, तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये तो ऑफस्प्रिंग हो गया नॉर्मल ऑफस्प्रिंग जो ट्विन नहीं है. तो अगर ट्विन होंगे तो ओके, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींच के
अगर एक लड़का एक लड़की ट्विन है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दैट ट्विन वी विल कॉल इट एज ए नॉन आइडेंटिकल ट्विन. नॉन आइडेंटिकल ट्विन मतलब जो सेम सेक्स का नहीं होंगे ट्विन. ओके, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस. नॉन आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जो सेम सेक्स ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे, मेल फीमेल, उसको हम लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विन बोलेंगे. अगर आइडेंटिकल ट्विन होंगे, मेल मेल फीमेल फीमेल, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज आइडेंटिकल ट्विन मतलब मेल मेल या फीमेल फीमेल, दो मेल या दो फीमेल ट्विन होंगे आइडेंटिकल. सपोज फीमेल का एग्जाम्पल लेते हैं. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये दोनों का बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये दोनों का बीच में ऐसे लाइन खींचेंगे. एंड दैट इंडिकेट्स आवर आइडेंटिकल ट्विन. ऑलराइट, सो दोनों के बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे हम लोग. नॉन आइडेंटिकल होंगे तो लाइन नहीं खींचेंगे. एंड दिस इंडिकेट्स ट्विन. ट्विन होते हैं एक नॉन आइडेंटिकल, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन. सो if it is twin, the offspring is twin, we do not represent straight line, we represent एक लाइन में ऐसे, ठीक है. अगर नॉन आइडेंटिकल है तो दोनों के बीच में ऑफस्प्रिंग का दोनों के बीच में लाइन नहीं खींचेंगे. अगर आइडेंटिकल है तो ये दोनों के बीच में लाइन खींचेंगे. सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट. ओके, अगर चाइल्ड मतलब ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन एडॉप्टेड होंगे, एडॉप्टेड पता है ना, एडॉप्टेड. सो अगर एडॉप्टेड होंगे, अगर फीमेल को एडॉप्ट करते हैं तो हम लोग उसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे. और मेल होंगे तो इसको स्क्वायर रखेंगे बट इन ए ब्रैकेट फॉर्म. सो ब्रैकेट में रखते हैं. दिस इंडिकेट्स एडॉप्टेड चाइल्ड. जो चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं उसको ब्रैकेट में रखते हैं. नेक्स्ट, मर गया, अगर कोई सेक्स मर गया तो इसको हम लोग नॉट ब्रैकेट में नहीं. इफ द फीमेल इज डेड तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं. इफ द मेल इज डेड तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो दिस मीन्स डिसीज्ड सेक्स. ओके, सो मेल अगर मर गया, डेड हो गया, तो उसको फीमेल मर गया. ओके, so this is all about pedigree analysis. See, very simple. It is nothing but a symbolically representation of the sexes and their offspring in the form of a diagram or in the form of a family tree. You call it as a pedigree analysis. इससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है? इससे हम लोग को ये फ़ायदा होता है कि हम लोग वो जेनरेशन का ऑफस्प्रिंग जान सकते हैं. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड the sexes of the offspring, and we can also understand the generation of the offspring or the generation of the parents. We can understand by seeing the family diagram. Understood? So this is all about pedigree analysis. So कुछ प्रॉब्लम आते हैं इसके ऊपर, नहीं आते हैं बेसिकली, बट आ भी सकते हैं. So let's do some problem. तो मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसके लिए. एक क्वेश्चन लिखता हूँ. Based on this, there is some problem, very interesting problem. Sometimes the question asks, basically नहीं आते हैं फिर भी. An intermediate skin color marries an
albino woman. They have 3 children. The first and second are daughter. And third is son. First daughter marries an intermediate skin color. Intermediate skin color men. They have 1 son and 1 daughter. 1 son and 1 daughter. The son is albino. Give the genotype of all. Give the genotype of all. So इसका genotype पूछा गया है, हम लोग को genotype निकलना पड़ेगा. Okay, so read out the question. An intermediate skin color. Intermediate skin color को हम लोग कौन सा जीन से represent करते हैं? Heterozygous gene. Remember, capital A and small a से represent करते हैं, right? Capital A and small a, yes. So intermediate skin color marries an albino woman. मतलब woman में defect है. Woman is albino. तो albino को हम लोग कौन से जीन से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल a. रिमेंबर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर का एग्जांपल दिया था ना. दे हैव 3 चिल्ड्रन. सो इंटरमीडिएट स्किन कलर albino woman के साथ शादी किए, उसके बाद उसका 3 चिल्ड्रन हुआ. ठीक है. द फर्स्ट एंड 2 आर डॉटर. पहले 2 बच्चा लड़की, एंड द थर्ड इज सन. तीसरा क्या होता है? लड़का होता है. द फर्स्ट डॉटर मैरिज एन इंटरमीडिएट स्किन कलर. जो पहला वाला उसका बेटी थे वो इंटरमीडिएट स्किन कलर के साथ शादी हुआ. सो दे हैव 1 सन एंड 1 डॉटर. एक लड़का एक लड़की. द सन इज एल्बाइनो. उसका लड़का क्या हो गया? एल्बाइनो हो गया. सो गिव द जेनोटाइप ऑफ ऑल. उसका जेनोटाइप के बारे में पूछा है, निकलना है उसका जेनोटाइप. ठीक है. तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पेडिग्री चार्ट बनाने होंगे. सो पहले पढ़ो क्वेश्चन को. एन इंटरमीडिएट स्किन कलर मैरिज एन एल्बाइनो वुमन. ठीक है. स्किन कलर मैन. ओके. स्किन कलर मैन. इंटरमीडिएट स्किन कलर मैन मैरिज एन एल्बाइनो वुमन. तो पहले हम लोग मैन को लिखते हैं मैरिज एन एल्बाइनो वुमन. ओके. जेनोटाइप को बाद में लिखते हैं, रुको. सो पहले चार्ट बना लेते हैं. ठीक है. सो मैन इंटरमीडिएट स्किन कलर मैन मैरिज एन वुमन, राइट. सो मीटिंग, मैरिज मतलब मीटिंग. सो वी रिप्रेजेंट लाइक दिस. दोनों को कनेक्ट करते हैं. दे हैव 3 चिल्ड्रन. उसके कितना बच्चा है? 3 बच्चा. फर्स्ट एंड सेकेंड आर डॉटर. पहला वाला लड़की, दूसरा वाला भी लड़की. एंड द थर्ड इज सन. तीसरा वाला क्या हो गया? लड़का हो गया. और क्या बोला? द फर्स्ट डॉटर मैरिज एन इंटरमीडिएट स्किन कलर. जो पहला वाला उसका बेटी है, दे मैरिज एन इंटरमीडिएट स्किन कलर मैन. ओके. आर यू गेटिंग? सो दे हैव 1 सन एंड 1 डॉटर. इसका एक लड़का एक लड़की हुआ. 1 सन एंड 1 डॉटर. सो एक लड़का एक लड़की. द सन इज एल्बाइनो. उसका लड़का में डिफेक्ट देखने को मिला. तो जेनोटाइप पूछा है, जेनोटाइप. तो हम लोग कैसे जेनोटाइप निकालेंगे? सो पहले तो देखो द इंटरमीडिएट स्किन कलर. इंटरमीडिएट स्किन कलर को हम लोग कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, राइट. मैरिज एन एल्बाइनो वुमन. ये वुमन में डिफेक्ट है, मतलब स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एल्बाइनो. रिमेंबर. नाउ अभी दोनों का क्रॉसिंग होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, ये अपना एक जीन देगा, ये अपना एक जीन देगा. ठीक है. ये अपना एक जीन देगा, फादर अपना एक जीन देगा, मदर अपना एक जीन देगा. तो पहले वाला उसका चाइल्ड को देखो, उसका बेटी में क्या बोला है?
they have 3 children, first and second are daughter. इसमें कुछ defect नहीं बोला गया question में, okay? Question have not mentioned any defect in these 3 children, okay? The question have not mentioned any defect in these 3 children. Now the female will give 1 gene, father will give 1 gene. Now the question has not mentioned any defect in these 3 children. The first daughter will receive, so 1 gene from female, that means mother, 1 gene from father. So female will give small a because 2 genes are small a only. Now father can either give a, capital A, or small a. But we have to look at the question, if there is any defect mentioned or not in these 3 children. So question has not mentioned any defect on these 3 children. इसीलिए father क्या देंगे यहाँ में, capital A देंगे. Why? Because अगर small a father, if father gives small a to first daughter, this daughter must have had some kind of defect in it. Okay, small a होने से the first daughter भी क्या होंगे, albino होंगे. But the question has not mentioned anything in these 3 children. So we will analyze, we will assume that father gives capital A to first daughter. Understood? Second daughter में भी देखो mother तो small a ही देंगे क्योंकि दोनों जीन ही small a है, तो small a रिसीव करेंगे mother से. father से देखो capital A रिसीव करेंगे कि small a रिसीव करेंगे. उसको जानने के लिए हम लोग को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में बोला गया कि second daughter is albino, if the second daughter is albino, then we would have had written small a from father. लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा बोला नहीं गया, that means it is normal, so father will give capital A. Similarly for male also, okay, small a from mother, capital A from father. हम लोग small a क्यों नहीं लिखा? Why we are not considering small a from father? Because the question has not mentioned any defect on these 3 children. Okay, that's why we assume capital A from father. It means both these 3 children are intermediate skin color. Okay. Now this first daughter here, the first daughter marries an intermediate skin color. Marries an intermediate skin color. So intermediate skin color के साथ शादी होते हैं, शादी करते हैं. Whatever. Okay. So this first daughter marries with an intermediate skin color. मतलब एक capital A एक small a होंगे. अगर albino बोलने से क्या लिखता हम लोग, small a लिखता, right? So this is intermediate. That's why we write capital A and small a. और dark skin color बोलने से क्या लिखता, दोनों capital A लिखता, right? तो अभी देखो next. They have 1 son and 1 daughter. उसका एक बेटा और एक बेटी है. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो. They have 1 son and 1 daughter. The son is albino. Okay, son में क्या देखने को मिला, albino देखने को मिला. Okay, son में डिफेक्ट है, son में डिफेक्ट है. सर क्वेश्चन में क्या बोला, जेनोटाइप पूछा है, यही पूछा है जेनोटाइप. ओके, जीन के बारे में पूछा है, उसके जीन क्या होंगे. पहले डॉटर को लिखते हैं. ठीक है, पहले डॉटर को लिखते हैं. सो डॉटर में तो कुछ डिफेक्ट नहीं बोला गया, सिर्फ सन में डिफेक्ट बोला गया है. सो डॉटर में हम लोग क्या लिखेंगे, सो मदर विल गिव स्मॉल ए, द फादर विल गिव कैपिटल ए. स्मॉल ए लिखने से दोनों एल्बाइनो हो जाएगा ना, स्मॉल ए. सो दिस डॉटर हैज नो एनी डिफेक्ट. सो वी विल एज्यूम द मदर गिव्स स्मॉल ए, फादर गिव्स कैपिटल ए. It can be one, okay, it can be like this also. Okay, the first case it can be like this also. Again it can be mother can give capital A. Okay, mother can give capital A either, and father can also give capital A. ये भी होने का chances है. Okay, देखो again, this daughter has no any defect at all. This daughter is normal. So we will assume mother must have had given capital small a first, father capital A. Okay, so intermediate. This represent intermediate. So intermediate भी हो सकते, or it can be also like
मदर कैन गिव कैपिटल ए, फादर कैन ऑल्सो गिव कैपिटल ए. डोमिनेंट भी हो सकते हैं, राइट. डोमिनेंट होने से डार्क होगा. इधर इंटरमीडिएट हो सकते हैं, इधर डार्क हो सकते हैं. बट कैन वी राइट इफ मदर स्मॉल ए, फादर स्मॉल ए, कैन वी राइट लाइक दिस? नो. ऐसा लिखने से इसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा. बट द क्वेश्चन हैज नॉट मेंशन एनी डिफेक्ट इन डॉटर. ओके, सो इट कैन बी एडर कैपिटल ए स्मॉल ए और एडर कैपिटल ए. ये दोनों होने का चांसेस है डॉटर में, लेकिन स्मॉल ए होने का चांसेस नहीं है. क्यों? द डॉटर इज नॉर्मल, नो एनी डिफेक्ट मेंशन इन द क्वेश्चन. बट द सन इज एल्बाइनो, ये उसका बेटा में क्या है? डिफेक्ट पाए गए, एल्बाइनो. सो मदर विल गिव स्मॉल ए, फादर विल गिव स्मॉल ए. दैट्स इट. ओके, सो यही है, यही पूछा गया. सो अंडरस्टूड. सो पहले तो फैमिली चार्ट बनाओ, पेडिग्री चार्ट बनाओ. सो इंटरमीडिएट मैन मैरिज ए नॉर्मल वुमन. दे हैव 3 children, 2 daughters and 1 son. The first daughter marries with the intermediate skin color and they have 2 children, 1 son and 1 daughter. The son is albino. Find the genotype. So genotype मतलब जीन को पूछा गया है. So start from here. Intermediate को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट. सो एल्बाइनो स्किन कलर स्मॉल ए. सो ये 3 children नॉर्मल है, कुछ डिफेक्ट नहीं बोला गया क्वेश्चन में. सो नॉर्मल चिल्ड्रन है, इसलिए फादर से एक कैपिटल ए आया, मदर से एक स्मॉल ए आया. ठीक है. यहाँ में क्यों कैपिटल ए नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ में दोनों ही जीन स्मॉल ए है, क्योंकि ये एल्बाइनो है. सो एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए आया. यहाँ से एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए आया. सो कैपिटल ए, स्मॉल ए आया. सब नॉर्मल, सब इंटरमीडिएट स्किन कलर पाए गए. ठीक है. हम लोग स्मॉल ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्मॉल ए लिखने से इन 3 चिल्ड्रन में एल्बाइनो पाए जाएंगे, डिफेक्ट पाए जाएंगे. लेकिन क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया. ऑल 3 चिल्ड्रन आर नॉर्मल. ओके. सो नेक्स्ट क्या बोला? द फर्स्ट डॉटर मैरिज विद एन इंटरमीडिएट स्किन कलर. They have 2 children, 1 son with albino and 1 daughter normal. Intermediate we represent capital A, small a, right? So marriage and they have 2 children, 1 son albino and 1 daughter normal. So daughter में जीन क्या पाए जाएंगे? 1 small a from mother, 1 capital A from father. So intermediate हो सकते हैं, or it can be also 1 capital A from mother, 1 capital A from father. It can be also like this. Okay, but cannot be small a because the daughters are normal, but the son is albino, so that's why small a from mother, small a from father. So this is the genotype that we have found out. So I hope you understood, right? So I will give you one homework, do it by your own. Okay, let me just modify this question. An intermediate skin color man marries an albino woman. Let me just modify this sentence and do it by yourself. Entrance में आता है ये सब क्वेश्चन. Okay. An intermediate skin color woman marries an albino man. They have थोड़ा बड़ा देते हैं 4 children. Okay, the first, second are daughter. इसको चेंज करते हैं. The first, second and third are son and fourth is daughter. Okay, the first, second and third are son and fourth is daughter. The first son, इसको son लिखते हैं. The first son marries an intermediate skin color woman. They have 1 son and 1 daughter. The daughter is albino. The daughter is albino. Give the generative. Okay, इसको तुम लोग खुद से बनाना, ठीक है? So intermediate skin color woman marries an albino man. They have 4 children. The first, second and third are son and fourth is daughter. The first son marries an intermediate skin color woman. They have 1 son
and one daughter. The daughter is albino. Give the genotype of all. Okay, so do it by your own. I'll give you this homework. So same formula use करो, पहले पेडिग्री चार्ट बनाओ, उसके बाद जेनोटाइप निकालो. इंटरमीडिएट को हम लोग कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एल्बाइनो होंगे तो डिफेक्ट है तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे. सब रिसेसिव होंगे तो चार्ट बनाओ, जेनोटाइप निकालो एंड शो मी. ओके, एप्स में एप्स होते दिए ना, एप्स में देना. सो आई विल चेक देयर. Okay, so with this we have completed this chapter. What you need to do is, along with my notes, try to complete all the questions from your NCERT book and try to solve all the previous year question paper starting from 2014 to till 2020. Okay, so if you find any difficulty, ask me.